Today we will be seeing how we can work with projections and what is WMS data. So to start with the projection, we need to understand what are map projections and coordinate reference system. See, when we work with the GIS data, this map projection would be a tedious work for us to do. But if we are making proper use of tools that are available, then we can make this job easy. We can deal easily with the projections. Let's understand what is map projection first. Map projection means whenever you are having a 2D curved surface of your globe, you are transforming it into 2D plane to make a map. So whatever is there on the globe, you are transferring so that you can make a map out of it. So if the globe is our globe is having latitude and longitude, so we are trying to map it into the locations which we can look in our map. That is what is called as map projection. And when we talk about coordinate reference system, the CRS is going to help you with the coordinates. What coordinates? The coordinates which are there in the projected map, and from where you have got those coordinates from the real places on the earth. Okay, those coordinates are related to the real places on the earth. So those coordinates you can get the help of those coordinates in the coordinate reference system. What we are going to do in this practical, we'll be seeing the projections and how we can deal with the tools when we are having the vector and the raster data layers. So the task here in this practical is we are going to select a feature and reproject it. We are going to select a feature from the layer and we are going to reproject it, and we are just going to see the overlay of those data layers in different projections. So let's get started. Before starting, I would tell you, if you are searching for the GIS practical data sets, you can find it in the description box. I have opened this QGIS. I will go to layer, add layer, add vector layer. I will be adding this countries, admin countries wala layer. This NA10M admin 0 countries wala. आपको इसको एक्सट्रैक्ट करके उसका SHP फाइल भी ले सकते हो. मैं जिप फोल्डर ले रही हूँ, ओपन करती हूँ और अभी ऐड कर देती हूँ. क्लिक ऑन ओके एंड दैट्स डन. सो यू कैन सी द लेयर इज बीइंग एडेड. ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज चेक करो, इसका इंफॉर्मेशन जानना है, इसमें क्या प्रोजेक्शन यूज्ड है. तो आई राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज एंड आई आइकन पे क्लिक करो. यहाँ पे हमने सिंबोलॉजी लेबल्स देखते हैं ना, बट उसके ऊपर एक आई है which gives you information, and you will get the information of the entire layer here. ठीक है, so you see the CRS, the coordinate reference system that is used is this EPSG 4326 WGS 84 geography. This WGS is World Geodetic Date system. ठीक है, so यहाँ पे हमने कोड देखा, रेफरेंस कोड देखा. ओके, I just close this. If you see, you are able to see the coordinates also at the bottom. जैसे जैसे आप देखो आपका कर्सर मूव करोगे ना, वैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होता है. एंड यू कैन सी दिस एट द बॉटम. यस, द करंट CRS विच इज देयर EPSG 4326. so that is a code that is coming. So the current CRS is this. So this is about the layer which we added. Now अब इसको reprojecting करना है ना हमको. So what we will be doing, we'll be making use of this feature. What is it? I can select by area और by single click. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं तो आप देखोगे आइकन चेंज हो गया है. एक रेक्टेंगल है और एक एरो है. तो मुझे फोकस करना है ये वाले एरिया में, तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, जूम इन करती हूँ. आई विल जस्ट सेलेक्ट दिस एरिया. ओके, सो आई विल सेलेक्ट द फीचर अगेन, क्लिक इन दिस रीजन. सो व्हेन यू क्लिक इन दैट रीजन, द कलर ऑफ द रीजन इज चेंजिंग, विच सेज दैट कि आपने वो एरिया को क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है. ठीक है, अब इतना होने के बाद आप जाओ वेक्टर पे, डेटा मैनेजमेंट टूल्स पे जाओ और रीप्रोजेक्ट लेयर करो. वेक्टर, डेटा मैनेजमेंट टूल्स एंड डू व्हाट, रीप्रोजेक्ट लेयर. आई क्लिक ऑन इट. So this will open up. Okay, so this is having an algorithm which will reproject your vector layers. Okay, अभी यहाँ पे रिप्रोजेक्शन में क्या होगा, इट इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लेयर, सेम फीचर्स होगा बट उसका जो CRS होगा दैट वुड बी डिफरेंट. कैसे, लेट्स सी.
अभी आपका इनपुट लेयर तो ये वाला है, ठीक है। आप इसको एनेबल कर दो सेलेक्टेड फीचर्स ओनली। टारगेट CRS चेंज करना है हमको यहाँ पे हम सर्च करेंगे 27700 कोड के लिए। सो इट इज ऑफ ब्रिटिश नेशनल ग्रिड EPSG. It is new projection now, okay? It is new projection. So I will select this 27700 wala and click on OK. I'm done with it. It ask me इसकी reprojected करके एक layer create हो जाएगा, या फिर आपको खुद को एक file name देना है। तो I will write save to file and I will write United Kingdoms. United Kingdom, ठीक है। ये अपना फाइल का नाम दे दिया। क्लिक ऑन सेव। सेव पे क्लिक करके क्या करना है, हमको रन करना है वो एल्गोरिथम। सो रन करते ही आप देखोगे लेफ्ट साइड में यूनाइटेड किंगडम का लेयर क्रिएट हो चुका है। यू क्लोज दिस, लेट्स सी इट। आई विल जस्ट अनचेक इट। इसको अनचेक किया, ये देखो यू आर एबल टू सी दैट यूनाइटेड किंगडम। सो you see a new layer appearing here, United Kingdom. Okay, so this both layers will be exactly like with one another. If you see nothing has changed, you feel, right? So it is just exactly the layers are lined up so much together. Even they are in different CRS, क्योंकि वो पहले वाले लेयर का CRS अलग था 4326 वाला, और इसका अलग है। ये इसका देखो मैंने रखते ही वो आ रहा है ना EPSG 27700, और यहाँ पे इस पे रख के इट इज शोइंग 4326. Even they both of them are in different CRS, still they are lined up so much exactly with one another. So ये एक QGIS का फीचर बताता है on the fly CRS transformation. Means कि whenever a layer CRS, now this is my layer CRS, it is not matching the project CRS which is there, but still it can be displayed very much correctly. Okay, so I just uncheck it. You can see United Kingdoms is there. I will just zoom in. Oh sorry, I have zoomed in United Kingdom's layer CRS and set project CRS from the layer. But before that, let's check the information of this. Go to properties and you just click on OK, and you will be able to see the information here. See, the EPSG is what, 27700 British National Grid. But जब आप यहाँ पे देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, 4326. So how we can just match up? Okay, how we can so how can we match the layer CRS with our project CRS? I will just right click here on United Kingdom, layer CRS पे click करो, set project CRS from the layer. You have to do what? Set project CRS from the layer. So if I do that, you see what is the EPSG now? It has changed ना, पहले changed नहीं था, both were not matching ना. So we have just done the thing to match it. Layer CRS करके set project CRS from layer किया, तो आपको दिख रहा है कि EPSG 2700 set हो गया. Now what we will be doing, we will be going to layer and we will be adding a raster layer. Okay, now add raster layer. अब raster layer में we will be selecting a file, this one, mini scale standard R23. It's a TIFF file. I select it. I click on open. I click on add. Now what you are able to see. Okay, it is that region only which we had selected. The same region has came. But what about this United Kingdom wala layer na? Okay, so what we'll be doing, we'll be just dragging this mini scale below United Kingdom. Now you see. Okay. We have just dragged the mini scale layer below the United Kingdom layer and we are able to see this output. Now if you click on mini scale and check for the properties of it, just clicking on it and checking for the properties in information, you see here EPSG 27700. So which confirms that the raster layer CRS is same as the project CRS.
the raster layer. This is my project CRS now. पहले प्रोजेक्ट CRS क्या था, 4326 था, फिर हमने चेंज किया ना, यूनाइटेड किंगडम पे राइट क्लिक करके लेयर CRS, सेट प्रोजेक्ट CRS फ्रॉम लेयर करके सेट हो गया, ये चेंज हो गया, करेक्ट। अभी क्या हो गया, हमने ये मिनी स्केल का इंफॉर्मेशन जब चेक किया, व्हाट इज हैपनिंग हियर, EPSG 27700 चेंज हो गया, मतलब कि जो रास्टर लेयर आपने ऐड किया ना मिनी स्केल वाला, इसका CRS सेम है एज अवर प्रोजेक्ट CRS. So this is about your practical 5. Hope you would have understood it. Please share it with your friends. Do like the video. Stay tuned. Keep watching for more such videos. Thank you. Till then, take care. Bye.